फेयरवेल की इस सुहानी शाम और मेरे प्यारे सीनियर्स के नाम प्रस्तुत है ये 4 पंक्तियां इस उम्मीद के साथ कि यहाँ बैठे हर किसी के दिल को छू जाए मेरी ये बात। कभी कभी जिंदगी के कुछ पल इतने खास बन जाते हैं कि वो हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो हमसे दूर चले जाते हैं। फिर कुछ यादें इस जहन में इस कदर समा जाती हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर वो लम्हे याद आते हैं। जहां पर पहली बार गई थी घर वालों को छोड़ के, दोस्ती करना जहां से सीखा कुछ नया सा रिश्ता जोड़ के, जहां पर रोते आए थे और रोता था हमारा आखिरी दिन, आज भी याद आते हैं वो खट्टे मीठे स्कूल के दिन। Hello my dear students, it has been 2 years since I became your class teacher and I have cherished every moment of it. I know you still dread my subject, but it is one of the most important ones, so please give it your best shot in your examinations ahead. Do well. I wish you loads and loads of luck for all your future endeavors. Do well and stay good. Thank you. I wish all of you the very best for a bright and successful future. जब लेट हो जाते फिर बाहर हो जाते, टीचर्स के नए नए नाम बनाते, हर रोज मॉर्निंग में टीचर्स को गुड मॉर्निंग मिस गा के सुनाते। वो पेंसिल से पेन में कन्वर्ट होने वाली फीलिंग, वो हाउस सिलेक्शन तो हमारी क्रिकेट की पहली इनिंग, वो कैंटीन के समोसे तो बंकिंग पॉइंट की बातें, हम सबका फिर साथ मिलके वो छुट्टी की मुलाकातें। Going by the tradition, it is time to bid farewell to the 12thers, but my heart skips a beat to bid you farewell to one of the finest batches and yet the naughtiest. I wish you all good luck for all your future endeavors, and remember, you need to strive and excel in whatever you do and become an angel of change so that you become a better human being and is in a position to make a better place in society. Thank you. वो रीसेस के पहले टिफिन का खाना कितना अच्छा लगता था। रीसेस तक कोई टिफिन ना बचे, कुछ ऐसा संकल्प होता था। टीचर जब पीछे मुड़ते हम चुपके से टिफिन खाते थे, दोस्तों का टिफिन उससे पहले हम ही खत्म कर जाते थे। Hello boys and girls. I'm really proud to be associated with this batch. I have had the pleasure of interacting from the core of my heart with each one of you. I have been with you for 4 years. Some of you have been with me, and I'm blessed to have students like you. And I feel you should take this opportunity to thank God for sending you to this wonderful institution, which has shaped you what you are today. And I'm sure in future, whatever you have taken from this school, you are going to make use of these things to make yourself presentable in the world outside, so that you are remembered as a good human being. Only a good human being is needed in the modern world. And I'm sure your parents, your teachers, the institution will be proud of you when we see you in future in different arenas of your life. All the best, my dear children, and all the best for your examinations which are just approaching. Thank you, boys and girls. वो
ब्लैक लिस्ट का भी टैग लगा के हम बैक बेंचर कहलाते थे। पेन फाइट से लेकर कितने ही गेम्स हम पीछे खेला करते थे। कभी चौक डस्टर वाला क्रिकेट तो कभी बुक क्रिकेट खेलना, फिर चौक के छोटे छोटे टुकड़े करके एक दूसरे पर फेंकना। I do not want to wish you best of luck. I don't want to tell you anything, but the first thing that I would like to share with you is those children who are vying to get 85 and above, 90 and above, please, please, please do not study from workbooks or any ready-made answers that are available in printed form. Please go through your texts. Your text is very important, children. Whatever is written in the text will fetch you more marks than you learning from somewhere else. I'm very worried about that part of your literature. So now I'm going to wish you best of luck and stay blessed. वो वॉशरूम में सबका साथ जाना, आधा पीरियड वहीं बिताना, वो छोटी छोटी लड़ाइयों पर स्कूल के बाहर मिल कह के एक दूसरे को हड़काना। I'd like to congratulate each and everyone to complete a big milestone in your life. So, all the very best for your future endeavors. Have a great, wonderful life ahead. Keep going. वो स्कूल के प्रोजेक्ट्स तो कंप्यूटर लैब की बातें, कोई अगर पानी पीने को जाता तो उसको अपनी बॉटल्स पकड़ाते। वो कॉपी का कवर तो स्टाफ रूम में जाने का डर, वो अच्छे वाले सर तो वो खड़ूस टीचर। All the best for your board exams. We love you all. Students, you're full of caliber, lots of potential. Only problem is that you have not channelized yourself. You are taking things very lightly and you have taken life also so easy. But I'm telling you boys and girls, the life is not like this. Be grateful to God that everything was well balanced, normal for you all, and therefore you don't know the harshness of the life ahead. So my suggestion or my piece of advice to you all before you leave the school is that take things seriously, do the best, and I'm 100% sure that each and every one of you are going to put the name of your little star school very high. Thank you, boys and girls. वो कागज के जहाज, लाइब्रेरी की मुलाकातें तो हमेशा ग्रुप फोटो में दोस्त को गुदगुदाते। जब एनुअल ओडिसी आता था पूरा स्कूल जैसे सज जाता था, हम भी सज के जाते थे, कितना मजा उड़ाते थे। Good afternoon, everyone here. 3 words which describes you the best, according to me, are solicitate, affectionate, and amiable. Here there's a short message for you from my side. Believe in yourself and all that you are. Remember that you have something inside you which is much more stronger than any other obstacle in your life. The ability to succeed, to fail, to win, to lose is just a matter of attitude. So if you can dream, I believe that you can achieve it too. I wish you all the very best from my side. Wish you a very, very happy and loving life. Thank you, children.
दिन, महीना, साल बीत गया, कैसे समझ नहीं आया। इस फेयरवेल ने आके आपको स्कूल की नींद से जगाया। आज फेयरवेल पार्टी पे बन ठन के आना, नए नए हेयर कट्स तो बालों में जेल लगाना, स्कूल के आखिरी दिन पे ऐसे वादे करना, मिलते रहेंगे दोस्तों, हमें भूल मत जाना। स्कूल के दिन की सारी यादें आज भी बिल्कुल वैसी हैं। सब आंखों के सामने आके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाते हैं।